Hello everyone, welcome to Study with Rajiv. This is Class-6 NCERT series, Chapter 8, which is Body Movement. तो बॉडी मूवमेंट का ही मतलब है टू मूव, हिलाना, like the able to move. तो हाउ कैन यू मूव? यहाँ पे एक चार्ट है और सोचो आप कि एनिमल्स का नाम है जैसे काऊ, ह्यूमंस, स्नेक, बर्ड, इंसेक्ट, फिश. तो बॉडी पार्ट्स दैट आर यूज्ड फॉर मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, लाइक काउस कैसे मूव कर पाती हैं? थ्रू देयर लेग्स मूव. हाउ डज एनिमल मूव? तो वॉक, काउ में रन. ह्यूमंस का भी है, लाइक बर्ड्स का तो बर्ड्स फ्लाई. सो what are the body parts that are used in movement? So human body and movement. So अगर आप यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है कि फिजिकल एक्सरसाइज हमने स्कूल में की है, तो वहाँ पे हमें डिफरेंट बॉडी मूवमेंट्स कराते हैं. सो our body is made of bones and skeletons, and remember bones doesn't move. bones में movement नहीं होती है. for example, if you like see in this picture कि अगर आप दोनों हाथ बांध लेते हो, can you move your elbow? No, you can't. so bones can't move, लेकिन दो bones के बीच में there is a cavity where a joint is there, so that joint helps us move आवर हैंड और दैट एनी पर्टिकुलर ऑर्गन. सो ये जॉइंट ही है जिसकी वजह से हमारा मूवमेंट हो पाता है. और बहुत सारे टाइप के जॉइंट होते हैं, लाइक फॉर इमेजिन योर नेक एंड योर हैंड्स कैन मूव 360 डिग्री, बट कैन योर नेक मूव 360 डिग्री? अब क्या आप अपना पीछे का देख सकते हो? नो, यू हैव टू टर्न बैकवर्ड्स टू सी, बट योर हैंड्स कैन गो एनीवेयर like that only. So there are types of joint which I'll say कि पहला है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, दूसरा है pivotal और तीसरा है hinge. So we will deal with that one by one. बॉल एंड सॉकेट यू नो कि 360 डिग्री वैसे ही होगा. कैविटी क्या है हमें पता चल गया कि like you can see there is a thigh bone and hip bone. So इन दोनों के बीच में there is a cavity where a ball and socket joint is there. So ball and socket joint की खासियत क्या है कि it helps you move 360 degree. Like imagine your thighs, your legs also move 360 degree. Like डांस में जो करते हैं पैर ऐसे चेयर पे बैठ के you can move your legs गोल गोल. बॉल एंड सॉकेट जॉइंट यू नो. नाउ देयर इज़ अ पाइवटल जॉइंट. तो जहाँ पे हमारा गर्दन जो है, जो हेड को कनेक्ट करता है, दैट जॉइंट इज़ कॉल्ड पाइवटल जॉइंट. ये इट अलाउज अस टू बेंड फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, राइट और लेफ्ट, बट नॉट 360 डिग्री. आप एक साथ सब जगह नहीं देख सकते. सो दिस इज़ पाइवटल जॉइंट. तीसरा है हिंज जॉइंट. हिंज जॉइंट यहाँ पे होती है नी में, लाइक अप एंड डाउन. दिस मूवमेंट इज़ अ हिंज जॉइंट. एंड नाउ देर आर सम जॉइंट्स विच आर फिक्स्ड. मतलब कुछ जॉइंट को आप हिला सकते हो, लाइक मूव कर सकते हो, बट अब सोचो बिटवीन योर एल्बो एंड योर पाम, कैन यू मूव दैट बोन? नो, यू कांट. सो दो जॉइंट्स विच कैन नॉट मूव आर कॉल्ड फिक्स्ड जॉइंट्स. सम ऑफ द जॉइंट्स दैट कनेक्ट योर पार्ट्स ऑफ द बॉडी. अब दूसरे टाइप का बोन्स है. देयर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट दैट दे आस्क इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की हाउ मेनी बोन्स आर देयर इन ह्यूमन्स. तो रिमेंबर, जस्ट मग इट अप, 206 bones at the adulthood and 305 in the childhood. So not childhood, at birth it is 305 and when you grow up it is 206. So you just remember it. Now there a framework of bones is called skeleton. पूरा skeleton है. Now we will read it part by part कि जैसे face वाला skeleton में कितना bones है. Number of bones we have studied कि 206. All these bones together make a skeleton. So there is a different, and how can you get it? So you must have seen in movies or there are real dummies also it of. And for x-ray, like किसी का पैर टूट जाता है तो हमें कैसे पता चलता है? तो हम x-ray कराते हैं. So through these x-ray we can see of joints or anything. So there are different kind of bones. Every bone is not equal sizes. So carpals का है, the small bones are called carpals in the your hand. So if you read this paragraph ki it seems to have many bones, isn't it? It is made up of very small bones
विच आर कॉल्ड कार्पेल्स. तो हाथ में जो है उसको कार्पेल कहते हैं. नाउ देयर इज अ रिब केज. रिब केज में आपको नंबर्स याद रखना है 12 into 2. सो देयर इज अ पेयर. So the rib cage join the chest bone and the backbone together to form a box, and this box is called rib cage. There are 12 ribs on each side of the chest. This is what you have to mark. Now a backbone is there. You know that backbone which gives you strength to sit and straight. Like this is the main backbone, which is like the midrib in the leaves is same to बैकबोन इन द ह्यूमंस. सो बैकबोन है तो बैकबोन में कितने हैं तो 33 है वर्टिब्रीज. सो numbers, it is all about numbers that they ask. Now there is shoulder bones, pelvic bones. So pelvic is lower area. So pelvic bones, skull is there. So जो सर है वो skull कहते हैं हम लोग. Skull is there. So there are different kinds of shape. Now bones, maybe there are some bones which are soft and which can be bent. So like imagine your ear, that can be bent. No, it is also a bone but it is soft. So this bone is called cartilage. We have seen type of bones. Now we have seen muscle होता है, muscle bulge करता है, contraction, relaxation. So two muscles work together to move a bone. दिस इज़ ऑल्सो मसल में कैसे होता है तो मसल में कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होता है. अगर आपने इफ़ यू डू सब एग्जाम्पल इफ़ यू गो ऑन रनिंग, सो आफ्टर यू कम बैक एंड रिलैक्स योर मसल गेट्स कॉन्ट्रैक्टेड एंड यू स्टार्ट फीलिंग पेन. सो योर मसल्स कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स. नाउ देयर इज एरिस्टोटल ने किताब लिखी है. इस गेट ऑफ एनिमल्स में ये बताया गया है कि हाउ, गेट का मतलब ही होता है मूवमेंट, हाउ दीज एनिमल्स मूव. तो इसमें अर्थवर्म की बात की गई है, स्नेल की बात की गई है, कॉकरोचेस एंड बर्ड्स एंड स्नेक्स. सो एंड फिश. तो फिश में क्या है कि देयर इज़ अ पर्टिकुलर शेप ऑफ द बॉडी विच इज़ कॉल्ड स्ट्रीमलाइंड. मछली का अपना ही आकार होता है. एवरी फिश इज स्ट्रीमलाइंड एंड इट हैज़ fins which helps in movement. कॉकरोच में देयर इज़ अ पेयर ऑफ लेग्स. बर्ड्स में यू नो विंग्स. स्नेक्स कैसे मूव करते तो स्नेक्स स्लिथर. योगा में क्या है तो योगा हम लोग पढ़ेंगे कि पतंजलि ने योगा फिलॉसफी दी थी. योगा इज़ अ वैल्यूएबल गिफ्ट ऑफ एंशियंट इंडियन ट्रेडिशन बाय पतंजलि. 21st June is declared as International Day of Yoga. It is celebrated every year. Or what does yoga do to you? Yoga helps you stretch. It keeps you healthy. Your body movements, your internal body also becomes good. So let's come to summary of the book. यहाँ पे क्या है, जैसे फिश कैसे स्विम कर पाती हैं बाय फॉर्मिंग लूप्स अल्टरनेटली बिटवीन द टू साइड्स ऑफ द बॉडी. दे आर एबल टू मूव. स्ट्रॉन्ग मसल्स एंड लाइट बोन्स वर्क टुगेदर टू help the bird fly. Like they have very light bones, hollow bones they have, and they have very strong muscles which help them flap their wings, and that's how they move. Snakes कैसे slither. सांप को आपने देखा होगा रेंगते हुए on the ground by looping sideways. A large number of bones and associated muscles push the body forward. कॉकरोच में क्या है, बॉडी एंड लेग है जो पूरा उसको कवर करता हुआ. 3 pair of legs है. विंग्स है विच हेल्प देम वॉक एंड फ्लाई. विंग्स है तो फ्लाई, एंड पैर है तो दे कैन वॉक. अर्थवर्म कैसे मूव करते हैं तो अर्थवर्म्स मूव बाय ऑल्टरनेट एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द बॉडी यूजिंग मसल्स. तो हमने पढ़ा था कि मसल्स क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स. सो एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन यूजिंग मसल. और ब्रिसल्स होती हैं. व्हाट इज ब्रिसल्स? लाइक स्मॉल हेयर्स. इट्स लाइक bristles are hairs. Small bristles on the underside of the body helps in gripping the ground, like very small. Snails कैसे? So snails help with the help of a muscular foot they move. So now we have seen how every movement in the human body and Aristotle की किताब which is Gait of Animals, और उसमें कैसे कैसे movement होता है. That's it for this video. Thank you. And now we are done with chapter 8.